Today's our topic is directing. ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के लिए आज का लेक्चर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हम किसको कहते हैं? दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ दिस मैनेजमेंट। दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Earlier we have told planning, organizing, staffing. These were the three functions. Now the fourth function is directing. When these three functions, planning, organizing, staffing, that we put in the next beginning here is directing. Directing means to supervise these employees, to guide the employees, to motivate the employees to work in such a way efficiently and effectively that we can achieve the organizational objective. तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग किसको कहते हैं। तीन फंक्शन हमने पहले पढ़ी ही, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। When these three these functions have been complete, the fourth function is directing. Directing means guiding and supervising the people to do some work. Directing means to guide the employees, to motivate the employees, to supervise the employees to work in such a way that we can achieve the organizational objective. Means directing means guiding the employees. हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि ये काम किस तरीके से करना है और क्या करना है। दैट मीन्स गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द पीपल और वर्कर्स और एम्प्लॉइज टू वर्क इन सच अ वे दैट वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल objective. This is the important fourth is the important function of this management, that it is that directing means that guiding and supervising the people to do some work in such a way that we can achieve the organizational objective. When the people posted at different posts, we have the different department and different people are posted in different departments. Now they have to perform their work. तो उनको अब अपना काम करना है, किस तरीके से वो उनको देखना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, गाइड करना है कि आप काम उस तरीके से करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करो. You can give full contribute towards the work. That how which work you are going to perform, that do it in a best and effective way, so that our target, so that our organization objective can be achieved. Go guiding, supervising, motivating the work to work efficiently and effectively. Though it is also one of the important function of management that we can guide the employees, we can supervise the employees, we can motivate them, when we can motivate them, when we can supervise them to work effectively, कि काम इस तरीके से करो effectively or efficiently, that we can achieve the organizational objective. It is the guiding, supervising the people to do some work. In every organization there are various departments and each department has to perform the work in such a way that we can achieve the organizational objective. That we can say that directing contributes toward the life of the organization throughout the life of an organization. जितनी देर तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, चलेगी, तो उस वक्त तक हमारी जो डायरेक्टिंग है ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी. To achieve the organized objective, we have to direct the employees, we have to supervise the employees, that we can achieve the organizational objective. तो कोंटस एंड ओ डोनियल ने एक डेफिनेशन दी है. उन्होंने क्या बताया है, एक डेफिनेशन हम लिखेंगे. डायरेक्टिंग इज ए directing is a complex function that includes all the activities, that includes all the activities which are
designed to encourage subordinates to work effectively and efficiently so that our goal can be achieved. Kuntz and अगर हम इस डेफिनेशन की बात करेंगे जो कुंटज और ओडोनियल ने बताई, डायरेक्टिंग इज ए कम्प्लेक्स फंक्शन, ये बहुत ही कम्प्लेक्स फंक्शन है इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द मैनेजमेंट, दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी, इसमें वो तमाम एक्टिविटीज आते हैं जो आप काम करवाते हैं, वो देखना है सिर्फ डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग इज ए कम्प्लेक्स फंक्शन, ये कम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर डिजाइनेड, जो डिजाइनेड किए गए टू इनकरेज सबऑर्डिनेट, जो हमारे सबऑर्डिनेट है, जो आप हमारे एम्प्लॉइज है, टू इनकरेज द सबऑर्डिनेट, टू मोटिवेट द सुपरवाइज, टू गाइड देम टू वर्क इफेक्टिवली। यहां भी वही कहता है, to encourage, to motivate, to supervise the employees to work in such a way effectively and efficiently so that our goal, our organizational motive, our organizational objective can be achieved. Then when we can guide the employees, we can supervise the employees, we can motivate the employees so that they can work in such a way that our organizational objective can be achieved. तो हम दूसरा भी हम कह सकते हैं, directing is telling people what to do, telling people या telling employees what to do, आपको क्या करना है।